welcome to everyone. Welcome to another lecture of my YouTube channel, which is named as B.Chemistry. Myself Bishwajit Pal. The channel goes to some basic aspects and the chapter wise portion in the subject in the area of chemistry. In this channel, we are going to have some topic wise lecture regarding physical, organic and the inorganic portion, as well as we have several solved paper regarding exams, JEE Mains, NEET and so on. As I have been uploaded regarding 4 lectures in the solid state, and it is a going on process which will happen in our next lectures. For today's lecture, we have the carry out part of the solid state. For question paper solve portion, we will have that video lecture very soon in our channel, that we will have the 2nd September 2020 afternoon session JEE Mains solve paper. It will be uploaded very soon. But for now, for today's lecture, we will have another lecture about solid state, in which we are going to have some numerical problems regarding the cubic closed packed structure in crystalline solid. In my lecture number 4, I explained the theoretical aspects of the cubic closed packed structure in the crystalline solid, where we deeply explain the octahedral void, the tetrahedral void, the layer wise phenomenon to form the crystalline solid structure and several things. As I explained in that video, we are going to have another lecture regarding the numerical portion, which is very important for any kind of competitive exams and also for the board exams. So here we are going to have that lecture where we are going to solve some basic numerical problem which can come in exam from that topic of cubic closed packed structure in crystalline solid. I hope that should be knowledgeable to you. The videos that I am uploading to you, if it's beneficial, if it's knowledgeable to you, if it's helped to you boost up your concept, then subscribe to my channel, which is named as B.Chemistry. Share the channel, like the video, and if you have any queries regarding my concept, my theories, what I am explaining to you regarding any aspects, comment down below. हम लोग इसके साथ और एक चीज़ लाने वाले हैं. We will have a Facebook page very soon where we will get all the updates regarding various kind of competitive exams, daily quizzes and DPP sheets, and also our YouTube channel resource. I hope it is going to be more beneficial to you to have more resources, not only just like YouTube. So ज़्यादा समय नष्ट मत करके, we will have our today's topic, cubic closed packing structure in crystalline solid, numerical solved problems. So here we start our today's topic. So here we have the first problem regarding the cubic closed packed structure in crystalline solid. Those are the problems which are pretty common in various kind of competitive exams. So I think the problem that I am discussing with you, it's very important to understand, and obviously अब अगर अब तक तुमने वो थ्योरी वाला पोर्शन रिगार्डिंग द क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर ये वाला चीज़ अगर नहीं देखा है तो आई बटन में उसका क्लिक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके आई थिंक यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज it should be beneficial to you if you have the concept about octahedral void, about CCP structure, about HCP structure, about tetrahedral voids. So those are the things that you have to understand before go to that lecture, because numerical करने के लिए तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है to have the knowledge of theory. So for that आई बटन में उसका क्लिक लिंक होगा, वो चीज़ एक बार देख लेना, अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट शुड बी हेल्पफुल टू यू. ओके, सो वी स्टार्ट with our first numerical. Okay, the question is, a solid is made of 2 elements X and Y. X are in FCC arrangement and Y occupy all the octahedral sides and alternative tetrahedral sides. What is the formula of the compound? Okay, जैसे हम लोग ने देखा था about that unit cell structure के लिए, जहाँ से हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था, बाय द सेम एस्पेक्ट्स वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रेशियो बाय विच द फॉर्मूला इज फॉर्म्ड.
ओके, दैट इज एक्स वाई का क्या रेशियो है रिगार्डिंग, वी हैव द फॉर्मूला एक्स वाई टू, एक्स टू वाई, एक्स वाई थ्री एंड सो ऑन। तो वही चीज हम लोग को निकालना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट दैट फॉर्मूला बाय हैविंग दिस डिटेल्स। ओके, तो देखते हैं। तो पहला चीज क्या बोला गया है, पहला चीज बोला गया है यू हैव एन एलिमेंट ऑफ एक्स विच इज इन एफसीसी अरेंजमेंट, ओके, which is in FCC arrangement, and we have an element y which is in which occupy the octahedral sides. That is pretty interesting, and also it is occupying the alternate tetrahedral side. Okay, साइड्स मतलब यहाँ पे वॉइड्स की बात की गई है, तो ये अलग कुछ देखने में नहीं लगेगा। सो वॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। So for that we will have FCC structure and the number of atom per unit cell for FCC is equal to 4। ये चीज हम लोगों ने देखा था फॉर द नंबर काउंट मेथड, जहाँ पे वी हैव द नंबर ऑफ एटम्स टू कैलकुलेट फॉर स्पेसिफिक unit cell structures. We have FCC calculation, BCC, we have several simple cubic calculation, we have end center calculation and so on। तो वो वीडियो भी अगर नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक होगा, तो उसमें क्लिक करके एक बार वो चीज देख लेना। So for the FCC part we have the number of atom per unit cell is 4। So as we have the number of atom per unit cell is 4, so for the x the number of atom per x is 4, because that is explained that x in FCC arrangement। I hope it should be, ये चीज समझने में उतना टाइम नहीं लगता, बिकॉज एक्स आर इन एफसीसी अरेंजमेंट, सो नंबर ऑफ एटम फॉर पर यूनिट सेल फॉर एक्स शुड बी 4। यहाँ पे पर यूनिट सेल को लेके ही हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं। सो फॉर द वाई, अगर नंबर ऑफ एटम तुम्हारा 4 आ रहा है, देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड शुड बिकम 4, बिकॉज आई एक्सप्लेन इफ द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज n, देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल आल्सो कम एज n, and for the tetrahedral void it will come 2n। 2n मीन यहाँ पे आएगा 8, तो octahedral void आ रहा है 4, tetrahedral void आ रहा है 8। I hope you understand, octahedral void is 4, tetrahedral void is 8। now the question is why occupy all the octahedral sites, मतलब y का जो नंबर हम लोग निकालने वाले हैं उसका तो octahedral site का तो लेंगे ही। अभी क्वेश्चन आएगा tetrahedral sites का क्या होगा। for the tetrahedral site we have amount of 8, then what is something represented by this is something represented as कि यहाँ पे लिखा हुआ है alternative tetrahedral sides। that means for tetrahedral void अगर 8 आ रहा है तो y को कितना होना चाहिए था, y को अमाउंट होना चाहिए था 8, लेकिन y का अमाउंट यहाँ पे 8 नहीं होगा, बिकॉज y का अमाउंट यहाँ पे होगा 4। द रीजन इज इट इज इन alternative tetrahedral sides। अगर ये खाली लिखा होता at tetrahedral side, then it will be no problem to have the y amount at 8, but here we have the alternative tetrahedral side which is something explained। ये 8 के जगह में हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, because it occupy the alternative tetrahedral sides। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालो, उसके अकॉर्डिंगली ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो रहा है वो निकालो, फिर इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है वो सही से देखो। तो वाई एटम ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड्स एंड अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल साइड्स। दैट मीन्स यहाँ पे वाई का टेट्राहेड्रल साइड्स में जो अमाउंट होगा वो भी आएगा 4, तो इट बिकम 4 + 4, दैट विल बिकम 8। सो द अमाउंट ऑफ एक्स इज 4, द अमाउंट ऑफ वाई इज 8। That means the ratio of x is to y, it will become 4:8, hence it will become 1:2, hence the formula that we are discussing to have this crystalline solid is x1 y2, which is something represented as xy2। I hope you understand the point। तो जो भी चीज मैंने यहाँ पे दिखाया बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, बट यू हैव द कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला था वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू हैव दोस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, नहीं तो ये चीज अगर समझ में नहीं आया कि हाउ इट्स बिकम डबल, तो ये तो पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से प्रूफ किया था दैट हाउ इट्स बिकम डबल। वो वीडियो एक बार देख लो, देन you will have the idea that why it's become octahedral void 4 and why it become tetrahedral void 8। और यहाँ पे ऑल्टरनेट लिखा हुआ है तो इसको लेके इसलिए हम लोग ज़्यादा
y इक्वल टू 4 कर रहे हैं, y इक्वल टू 8 यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. Okay, and hence we have the answer that is xy2. I hope you understand the numerical. तो जाते हैं दूसरा वाला प्रॉब्लम में. दूसरा वाला प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? इन अ सॉलिड ऑक्साइड आर अरेंज्ड इन CCP, 1/6 of the tetrahedral voids are occupied by cations A and 1/3 of the octahedral void are occupied by cation B. What is the formula of that compound? तो यहाँ पे तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. द नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंट इज A, the number 2 constituent is B, and the number 3 constituent is O. What is the information given for A? The information that they are given that 1/6 of tetrahedral voids are occupied by cations A. That means 1/6 into TD voids. Correct? For B, the information they are giving 1/3 of octahedral void are occupied by cation B. That means 1/3 of octahedral void. And for oxygen, what is they are giving? Their information that they are in CCP, cubic close packing arrangement. As I explained in my video lecture that CCP is something represent the unit cell composition of face centered unit cell. Of face centered unit cell. So as we know that for the FCC, the value of Z, that is number of atom per unit cell, is 4. So for the oxide ion, as it is in CCP type of arrangement, so the value of its for number of atom per unit cell, I repeat, number of atom per unit cell, the value of it should be equal to 4. So we have the value of oxide, which is something represented as 4. So for the tetrahedral void, the value of TD voids, as the number of atoms that you have, it is 4, so tetrahedral void should be 8, and the value of octahedral void, it should be 4, because it is something represented as 2n, it is something represented as n. So for A, it is occupying 1/6 of tetrahedral void, that is 1/6 of 8. So 1/6 of 8 में कितना आएगा? It will become 4/3. When you have the value of B, it is represented 1/3 of octahedral void, that is only 4/3. So we have the ratio, that is A is to B is to O, which is something represented 4/3 is to 4/3 is to 4. It will become 1/3 is to 1/3 is to 1. 1 is to 1 is to 3. This is the actual thing that we have to calculate, the ratio of the A, B and O. The simplest ratio of A is to B is to O is 1 is to 1 is to 3. Having this kind of simple numerical solve problem. So 4/3 is to 4/3 is to 4 equal to 1/3 is to 1/3 is to 1, it will become 1 is to 1 is to 3. Hence the formula that is our important to us, the formula, it will become A1 B1 O3, that is AbO3. I hope it should be beneficial to you and you understand the whole thing that I am discussing. So the formula that we have is something is AbO3. Okay, I hope you understand the concept. Okay, so it is a very good numerical based problem regarding cubic close packing structure, जहाँ पे 3 एटम 3 constituents तुम्हें दिया गया है and you have to find out the structure formula, sorry, the structure, not the formula, for that specific A, B and O constituents crystalline solid structure. Okay, I hope you understand the concept. So we will go for the question number 3. So for that question, what is there that in an element of atom Y, okay, क्या आ रहा है, CCP आ रहा है Y atom का representation, and those for the element X is having 2/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? ये दो न्यूमेरिकल करने के बाद I think that should be easily understandable to you to understand the concept that what I am explaining to you, और ये न्यूमेरिकल I think तुम्हारे लिए बहुत ही easy होगा.
तो ये न्यूमेरिकल के लिए वीडियो को पॉज करो, उसको खुद सॉल्व करो, देन वी विल हैव द आंसर जो मैं करूंगा और जो तुमने ऑलरेडी कर लिया है, वी विल हैव द मैचिंग पोर्शन ऑफ दैट। अगर सेम आ रहा है तो बहुत सही, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार ये वीडियो फिर एक बार देख लेना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसको पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद इसका जो मैं इसका सॉल्व निकाल रहा हूं उससे ये चीज एक बार मैच कर लो, देन यू विल अंडरस्टैंड वेदर योर मैथ इज राइट और रॉन्ग। सो यू हैव the element, you have the compound which is formed by element Y and formed by element X. The element Y is something represented in CCP type of arrangement and the element X is something represented by 2/3 of tetrahedral voids. Okay, 2/3 of tetrahedral voids. So as I explained the thing that for the CCP is just like the structure of FCC. So you have the number of atom per unit cell, the number of atoms per unit cell. What is something represented like? It should be, I think you understand, it should be 4. So for the element, for Y, the number of atom that it has should be 4, and as the number of atom per unit cell it is 4, so the tetrahedral void that having this crystalline solid structure, that should be 8 because it is represented as 2n. So for the X it is occupying 2/3 of tetrahedral void, that is 2/3 into 8, that will become 16/3. So for X is to Y, what is something represented? 16/3 is to 4, so it will become 4/3 is to 1, so it will become 4/3. So we have the formula which is something represented as, I think, X4Y3. So this is the formula of our compound. I hope you understand the concept. So this is a very important thing to understand, having a compound of X and Y which have their details in structure, जहाँ पे बोला गया है Y has CCP, Y form CCP lattice, X form 2/3 of the tetrahedral void, occupy 2/3 tetrahedral void. So everything is explained there. You have to just find out the formula. और जैसे मैंने बोला था पॉज करने के लिए, पॉज करने के बाद जितना लोगों का भी X4Y3 आया है, that is should be करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर दैट यू हैव। जिन लोगों का नहीं आया है एक बार रिवाइज कर लो ये न्यूमेरिकल को, और कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग माई कॉन्सेप्ट, माई थ्योरी दैट आई एम शेयरिंग विथ यू, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, गो फॉर द पैट, कॉमेंट करो उसमें। ओके, बट जो भी मैं ये थ्योरी तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, सारे चीज़ों को अलग अलग बुक से असेंबल करके ले रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा फीडबैक तो चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज समथिंग कॉल्ड B.Chemistry, दैट शुड बी मोटिवेट फॉर अस टू एनहांस आवर एनर्जी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। जिन लोगों का सही आया है, जिन लोगों का गलत आया है, गलत जिन लोगों का आया है, कोई डरने की बात नहीं है, यू हैव अनदर प्रॉब्लम, उस पर तुम ये चीज़ फिर से ट्राई कर सकते हो। Okay, so we have the question number 4. So what is explained in the question number 4? In the question number 4, explain ferric oxide, HCP of oxide ion, 2/3 of the 2 out of 3 octahedral voids are occupied by ferric ions, derive the formula of ferric oxide. अभी एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, ferric oxide is something represent iron is in Fe3+ state and oxygen is in 2- जो ऑक्साइड का होता है। So you have the formula which is something looking like Fe3O4. I think it is very common to everyone. नहीं तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। Fe3O4 के बारे में सब लोगों ने देखा है, बट यहाँ पे बोला गया है derive the formula, तो मतलब फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, लेकिन you have to derive it. How can you derive that part? It is something derived as it is. तो क्या बोला जा रहा है? You have the Fe3+ which is in 2/3 of octahedral voids. Okay, and the oxide is occupying HCP arrangement, that is hexagonal close packing arrangement. अभी हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, if you have the hexagonal close packing arrangement, पकड़ लेते हैं, let the number of oxide ion
कितना होगा, सपोज टू बी n, कैपिटल N. So the number of TD void, it should be n, and the it should be 2n, and the number of octahedral void, it should be n. Now the funda is, as oxide ion is occupying all the HCP arrangement, so the number of oxide ion present, it should be n, जैसे मैंने एक assume भी किया है. And for the octahedral void, as it's the value of n, so the Fe3 plus amount, it should be कितना आएगा, 2/3 of octahedral void, that is 2n by 3. So the ratio between F is to O, that is F is to O, that will become 2n by 3 is to n, that will become 2 by 3 is to 1, which will come out at 2 is to 3. Hence we can find out that the formula is, क्या आएगा formula, I think you got the point. Formula आएगा Fe2O3. जैसे हम लोगों ने बोला था, sorry, मैंने बोला था Fe3O4, sorry, that is not correct, that should be Fe2O3. Fe3O4 has a mixed oxide structure, sorry for this. Fe3O4 has a mixed oxide structure, so it should be Fe2O3. सॉरी, Fe3O4 इज अ मिक्स ऑक्साइड जहां पे आयरन 2 प्लस और 3 प्लस पे बिलोंग करता है. आयरन का FeO होता है, Fe2O3 होता है और Fe3O4 होता है. Fe2O इज फेरस, Fe2O3 इज फेरिक, एंड फॉर द मिक्स ऑक्साइड यू हैव Fe3O4. सो वी हैव द फॉर्मूला जहां पे आ रहा है Fe2O3. आई होप यू अंडरस्टैंड the concept by which you can derive the formula of an crystalline solid by having or by knowing its structural formula. Okay, it's very easy to understand. If you have the concept, it's very easy to understand. और यहाँ से ही JEE एडवांस में, JEE मेंस में क्वेश्चन आता है. नीट में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आता नहीं है. इन द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कमिंग फॉर द JEE मेंस एंड ऑल्सो फॉर द एंटायर बोर्ड एग्जाम्स. तुम जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, फॉर मी दैट इज शुड बी WBCHSE, वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसलिंग बोर्ड. वैसे फॉर द CBSE में ये चीज 11 में है. फॉर द ISC देयर आर सेवरल क्वेश्चन दैट कम न्यूमेरिकल पोर्शन रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. दैट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड. कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, तो ये वीडियोस ज़्यादा लंबा नहीं बनाते. ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. सो the lecture number 4 and the lecture number 5, those are the two things that is very important for you, and those are the two videos which are just collaborating to each other. अगर तुम लेक्चर नंबर 4 नहीं देखोगे तो 5 समझ में नहीं आएगा, और 4 अगर देखते हो तो 5 को भी देखना है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से लिंक है. सो एज आई रिकमेंडेड टू यू, गो फॉर द आई बटन लिंक, जहां पे मैंने ये लिंक दे दूंगा, जहां पे ये लेक्चर नंबर 4 का जो लिंक है, जहां पे मैंने सारा इसका थ्योरी एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन किया है, वो चीज में एक्सप्लेन किया है, वो चीज एक बार वेरीफाई कर लेना. देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल दैट वी आर गोइंग थ्रू. आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक, यू एंटायर कॉन्सेप्ट. यहाँ तक ही था ये चीज़. इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में जल्दी हम लोग का जो JEE मेंस का 2 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन आएगा, आफ्टरनून शिफ्ट का जो क्वेश्चन आएगा, वो अपलोड होगा. उसको भी थोड़ा देख लेना. अगर हेल्प लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर लेना. सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज B.Chemistry. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. सब्सक्राइब टू माई चैनल B.Chemistry. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.